हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने 6.8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो हाउ यू हैव टू राइट, इन व्हाट फॉर्मेट यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन। सो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ नॉन यूनिफॉर्म बार ऑफ वेट W is suspended at rest by two strings of negligible weight as shown in figure 6.33, that is shown here. The angles made by the strings with the vertical are 36.9 degree and 53.1 degree respectively. The bar is 2 meter long. Calculate the distance D of the center of gravity of the bar from its left end. So from the left end, that is this side, you have to calculate the value of D, right? So how we have to write this in our answer sheet? So first of all, that we write always given that what we have given in the question. So first of all, from the figure, 0.1 is equal to 36.9 degree and theta 2 is equal to theta 1 is equal to 36.9 degree and theta 2 is equal to 53.1 degree. Okay, and T1 and T2 are tension acting, and distance is equal to distance of cm from left side, that is distance of center of mass from left side, from this side, right? And this is the center of mass. Okay, after that you have to draw the figure that I have drawn here, because I have less area on a screen, so I have to write here. You have to write this figure on the answer sheet. Okay, so after writing this, you have to do balance of force and torque, right? So first of all we do balancing in horizontal direction. हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसे बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड का ये जो फोर्स है, this horizontal direction, this force and this force is going to balance each other, right? So उसके लिए हमने यहाँ पर एक इक्वेशन लिख लिया है, this is the equation for that. उसके बाद हम इसे आगे प्रोसीड करेंगे और यहाँ पर थीटा 1 और थीटा 2 का वैल्यू पुट कर देंगे. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वी आर गोइंग टू बैलेंस द टॉर्क अलोंग सेंटर ऑफ मास, राइट? सो सेंटर ऑफ मास के अलोंग जो टॉर्क लग रहा है वो इस टॉर्क के कारण लग रहा है बिकॉज ऑफ दिस फोर्स and because of this force. The torque acting along center of mass is because of this force and this force, right? So अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे टॉर्क 1, क्योंकि यहाँ पर इस डायरेक्शन में ये जो टॉर्क है ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो ये फोर्स लग रहा है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दोनों का साइन, दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, दोनों एक दूसरे के काउंटर अपोजिट है. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है उसे हम लोग पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक? और यहाँ पर ये फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने आंसर शीट में. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टॉर्क 1 इज कैंसलिंग आउट टॉर्क 2 इज इक्वल टू 0. दिस इज व्हाई द इक्वेशन वी हैव रिटन हियर. इस कारण हम लोग यहाँ पे ये इक्वेशन लिखे हैं. इसके कारण क्या हुआ कि टॉर्क 1 इज इक्वल टू टॉर्क 2, वी कैन से दैट. और यहाँ पर बिकॉज द फोर्स इज एक्टिंग इज परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वेक्टर, सो हम लोग साइन थीटा को साइन 90 इज इक्वल टू 1 ले सकते हैं. तो यहाँ पर साइन थीटा का जो टर्म है वो कैंसिल हो जाएगा और हम लोग T1 cos थीटा 1 इंटू डी इज इक्वल टू T2 cos थीटा 2 इंटू 2 माइनस डी लिख सकते हैं. दैट इज व्हाट वी, इफ यू कैन सी इन दिस फिगर, यू कैन गेस दैट टॉर्क T1 dash, that is T1 dash that is acting here is T1 cos theta 1 and into R, that is D. This is the R that we are going to take here. So this is the D that is we are writing here. And after that, in this side, the force that is acting here is T2 dash, and the value of T2 dash is T2 cos theta 2, T2 cos 53.1 degree, and the position vector is 2 minus D. We have written here. And after solving this, you can see the solving part here. We are going to divide the equation 1 with equation 2 that we are going to get here. We are going to divide this equation to this equation, and by in this form we are going to get the equation, the final equation. After this, T1 and T1 is going to cancel out, T2 and T2 is going to cancel out, and sin theta by cos theta is tan theta, then sin theta and cos theta. Here there is one mistake. I think cos theta is
here is cos theta, and here we get sine 53.1. So I have done a mistake here, sorry. I'm going to correct it, sine 53.1. Okay, so by calculating this, we are going to get tan 53.1 degree, and here in downside in denominator, that is d, and 2 minus d. By solving this, you will going to get the value of d is equal to 0.72 centimeter, and this is the required answer that you have to write.